जब कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर जब या सिविल इंजीनियर जब अपना खुद का घर बनाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो यूनिक हो, और जो कमियां वो अपने कैरियर के दौरान दूसरे प्रोजेक्ट्स में महसूस करता है, उन चीज़ों को अपने खुद के प्रोजेक्ट में या अपने खुद के घर में वो हमेशा दूर करने का प्रयास करता है। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और हमारी फर्म का नाम डिज़ाइन सेल है। ये करीब 30 इयर्स पुरानी फर्म है जिसमें हम डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन प्लस टाउन प्लानिंग, ये चारों वर्क हम करते हैं इस फर्म के अंदर में। जब इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम साथ में बैठे, मैं नीलकंठ अग्रवाल एंड किरण नायर, तो हमारा प्रोसेस ये था कि आज जब हम बहुत सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट करते भी हैं और एक कॉन्सेप्ट ये था कि जब कोई फ्लैट या अपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो होता ये है कि अफोर्डेबिलिटी, कि अगर मैं बंगलो अफोर्ड नहीं कर सकता तब मैं एक फ़्लैट पे जाता हूँ। सेकंड ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट में ये था कि फ़्लैट में हम बहुत सारी एमिनिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम कॉमन कर सकते हैं, जिसके कारण वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव लिविंग का एक पार्ट बन सकता है। तो प्रपोज़ल में हमने बंगलो की जगह स्किप किया कि जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं उनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट भी ये हाउस सस्टेनेबल हो, कि हमको बहुत यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट ना लगे। Hi, I'm Kiran Nair. I run a firm called KNAPL. We are based out of Pune. We do a lot of multidisciplinary work. We work in institutional projects, residential projects. For this project, we worked together with Neelkanth and Neeraj, and we've been working together for quite a few times. We collaborate on a lot of projects. So we wanted to come up with a concept that gave the customer the best of both worlds. Here, what we've tried to do is each unit is designed as a bungalow. Every room has access to the outdoors. Here we worked very hard, and that was a primary objective, to make each unit as Vastu compliant as possible. Each unit gives you lots of natural light, very good ventilation, and it responds very, very effectively to every change in season. And your actual dependence on artificial cooling or heating is tremendously reduced. So when we got down to designing, like we discussed earlier, our primary object was to give everybody the flexibility of having a bungalow with all the benefits of a community or a gated community. One of the biggest challenges was trying to integrate the Vastu into every apartment, because we have central cores and the apartments wrap around, so it gets very, very hard. Every house has to reflect the aspirations of the owner or his own characteristics. Neeraj is very grounded, very much in tune with our traditions, our systems, our culture, while all of us live in a modern world. But being modern does not mean we forget who we are and where we come from. The difference between the house and a home is, once the house has memory, it becomes your home. And that's what we've tried to achieve here. So the individual modules were more grid-like for ensuring the continuity and structural connect of the entire structure. You put a unit that way. This was the front face that got a complete terrace onto the front, which was open on a double height. And each of these grids then represented, so that became the living, dining, kitchen spaces, bed, and the service and utility cores going into the center, which ensured that each of our rooms had not only access to the outside as well as the views that we wanted. So if you look at
the base pattern of Neeraj's home, how it worked out. Again, the module was the same. We had the block. This was facing towards the garden. So this unit is actually a south facing unit. But the advantage with this is what happens is with the overhangs that we have, we ensure that a lot of the winter sun comes in. And with the winter sun, we are ensuring we get good light into the house throughout the year. Got an entry here. The entire front face has the terraces. So each of these spaces is opening as a standard. Once we enter into the space here, this becomes the services core, where a lot of the services utilities are there with the duct into the back space. We have the puja that goes into the northeast, which is again a bit of the Vastu requirements. We have the living space which opens onto the terrace right away. We moved the kitchen in this place. This was customized, so it changed a little from the standard pattern. But the kitchen moved onto the terrace into the front, on the front face. And we moved the dining on the inner side. Here we use these spaces as a family space again, so that became one private grid which made up of the family space, the dining and the kitchen, while this was more of the public space and the terrace and the entry. Closing that grid, we had a secondary grid which had a small guest bedroom over here, which again opened onto the terrace. We moved the small utility and the washroom here, and the staircase came into the back portion. And the last grid that was left here becomes the master bed with the toilet block and the walk-in wardrobes into the core. So basically what happens with this module is you have your living, dining, kitchen, family, 2 rooms on the ground, and each of these rooms has a direct connect into the terrace which overlooks the garden that you see. Similarly, when you move to the upper floor over here, you have the staircase that comes in into the central core area. We have a small home office over here, which is where we are sitting right now. We have a family and entertainment room over here, which is also used as a music room. We have one bedroom over there and another master bedroom over here. करना था स्लैब हाइट की अगर हम बात करते हैं या रूफ़ की बात करते हैं, मुझे वो सारी इस फ्लैट मिली थी। तो उसमें मेरा ये सोचना था कि जो इन्वेलप है उसको मैं बेसिक रखूं, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे वॉल्स हो, चाहे फ्लोर हो, और जो एस्थेटिक्स है वो कहीं ना कहीं एक हिंदू कल्चर को डिपिक्ट करता हुआ हो, जिसमें चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल भी वैसे ही है। तो हमने पूरे घर के इंटीरियर थीम में मेजर एक प्लेन सिंपल इन्वेलप रखा, जिसमें वॉल कलर्स बिल्कुल सेटल्ड थे, डोर्स सेटल्ड थे। सिर्फ जो डेकोरेशन हुआ है या जिसको मैंने किया है, वो जो मेरा इंटरेस्ट है या मेरी हॉबी है या मेरी या मेरे वाइफ की हॉबी है, उसको हमने कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में लिया है। तो यहाँ जितने भी आर्टिफैक्ट हमने यूज़ किए हैं या पेंटिंग्स यूज़ की है, सारी चीज़ कहीं ना कहीं एक इंडियन कल्चर या इंडियन आर्ट वर्क से लिया हुआ है। तो आपको पूरे घर में शायद वो पार्ट मिलेंगे। दूसरा, मैंने इसको एक मिक्स आर्ट के रूप में लिया है। ये नहीं है कि मैंने नॉर्थ को यूज़ किया या साउथ को यूज़ किया। जो चीज़ मुझे जहाँ की अच्छी लगती है, तो ये इस घर पे आपको ओवरऑल इंडिया के कहीं ना कहीं सब फ्लेवर मिलेंगे। साउथ के भी मिलेंगे, नॉर्थ के भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी मिलेंगे। तो सारा जो कलेक्शन है वो एक इन्वेलप के अंदर आपको फिट मिलेगा। So when we came down with the facade, we've done a lot of detailing on that, and the entire building is very warm in its approach. We've used natural materials as far as possible. We have bricks, we have wood in the framework. Eventually, we found Fenesta the best fit for us. They were extremely responsive to us. They were willing to customize, willing to bend backwards to take care of our concerns over there. One of the biggest concerns here was we wanted really large windows. In fact, the heights that we wanted here were more than the standard modules that Fenesta was developing at that moment in time. And they went out of their way to support us and made sure they redid their modeling, they reinforced their windows and gave us the kind of heights that we were looking for.
They gave us some excellent wood finishes. So it's almost hard to tell whether it's natural wood or synthetic product over there, but finish was excellent. आप खुद इसका कॉम्बिनेशन ब्रिक्स कोटा के साथ देख सकते हैं, काफ़ी उभर के ये चीज़ें आप महसूस भी कर सकते हैं जो पूरे इंटीरियर के साथ मिक्स हो रही है। तो फिनिस्टा के साथ मुझे एक ये बेनिफिट मिला कि वो प्रॉपरली मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने इन विंडोज़ को डिज़ाइन किया। और जिस जगह मुझे, जैसे मेरा खुद का फ्लैट साउथ फेसिंग है, तो वहाँ हमने DGU ग्लास लिया, प्लस उसमें कंडक्टिव रेडिएटिव हीट दोनों के लिए हमने प्रोविजंस लिए कि ग्लास कैसा यूज़ करें कि दोनों हीट हम रिड्यूस कर पाएँ, कि नेचुरल सनलाइट तो आए पर हीट मैं रिड्यूस कर पाऊँ। तो फिनिस्टा के साथ मुझे इस प्रोजेक्ट में मेजर बेनिफिट ये हुआ कि आफ्टर सेल सर्विस उनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फ्लैट प्रोजेक्ट है और इंटीरियर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। 30 फ्लैट्स हैं यहाँ पे, जिनको फिनिश करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आज 3 साल के अंदर सारे लोगों का इंटीरियर यहाँ कंप्लीट हो रहा है और फिनिस्टा उसके लिए छोटे छोटे सॉल्यूशन हमको हमेशा देता रहता है, इसलिए हमने फिनिस्टा को यहाँ सेलेक्ट किया था। They were able to give us a very, very good pricing, which makes using such a premium product cost effective for us in a commercial building without compromising the quality, the finish, the fitness, and giving us exactly what we were looking for. So that's something we were really, really happy about. And even after completing the entire project, Fenesta is backing us up 100%, providing all the support each of our individual clients requires, modifying some of the designs if required, changing them. Whatever we need is being done, and that's something absolutely exemplary.